So discuss about how to download MySQL. So click to Chrome browser and type MySQL download and open to first link and scroll and MySQL community and click to MySQL install for window. So click to 352 MB. So 32-bit download. So click no thanks, just my download. So download start. So wait. So completed download and click. So open, click to custom. Next click and MySQL click and MySQL server click and MySQL 8.8 click 8.0 click and 8.0 click. So click application and MySQL Workbench and documentation MySQL cell. Click MySQL cell and next click and next click. Yes. Check to drive and C drive and click to next and so up installation package and so wait for sometimes. And click next and click next. So click to next and next एंड यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डालेंगे MySQL का. हमें कोई सिंपल सा पासवर्ड डालना है जो हम भूल ना सके. सो हमने यहाँ पे अपना पासवर्ड फिलअप किया. सो मीडियम पासवर्ड है मेरा. सो क्लिक टू नेक्स्ट एंड नेक्स्ट क्लिक एंड नेक्स्ट क्लिक. सो अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन and finish. Click to finish. So next click and so installation complete, finish. So open to MySQL. Welcome to MySQL Workbench. So back to and open to cmd and type MySQL version and enter press. So MySQL is completely download. So back and go to file, click to this pci and go program files and MySQL. So click to MySQL server and click to bin and copy this path and back and go to environment variable. क्लिक टू इन्वायरमेंट वेरिएबल एंड पाथ पे क्लिक करेंगे और सो एडिट एंड न्यू क्लिक करके हम पाथ पेस्ट करेंगे. ओके एंड ओके. सो हमारा पाथ भी सेट हो गया. सो
open to cmd again. So my type MySQL version. तो हमारा MySQL कम्प्लीटली डाउनलोड हो गया है। सो हम चेक करेंगे अपना रूट। सो MySQL -u root -p। सो अपना पासवर्ड इंटर करेंगे जो हमने उसमें डाला होगा। MySQL इज कम्प्लीटली डाउनलोड। सो अब हम डाटा चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे सो डेटाबेसेस। सॉरी वो गलती से मैंने एस नहीं लिखा। सो डेटाबेस। सो माई टेबल इज रिप्रेजेंट हियर एंड सो अगेन वन क्रिएटेड। हमें कैसे डेटाबेस बनाना है। सो क्रिएटेड डेटाबेस पीके के नाम से होना। तो सो इट्स ओके, क्वेरी ओके, सो डेटाबेस ओके, database is so my database is completely installed. So back and thank you for this video.